नाउ व्हाट आर क्वांटम सबशेल्स? हमने क्वांटम शेल्स की बात करी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, व्हाटएवर सो ऑन. And we also call those principal quantum shells as the energy levels. The principal quantum shells apart from the first are split into subshells. पहले shells थे, अब इन cells की भी क्या है, subshells हैं. Each principal quantum shell contains a different number of subshells. The first energy level contains one subshell, and the second energy level contains two, and so on. So the subshells are distinguished by the letters S, P, D, and F. These are the four types of subshells. The energy of the electrons in the subshells increases in the order of S, then to P, to D, to F. F के अंदर सबसे high energetic electrons होंगे और S के अंदर सबसे low energetic electrons आएंगे. So this is the increasing energy order of the subshells S, P, D, and F. So if we look at the principal quantum shell number, first shell को हम K का नाम देते हैं and n is equal to 1 है. Maximum number of electrons that can be fit into this first shell is 2, and the number of subshells, इधर सिर्फ S subshell होता है, which is 1s. 1 denotes the principal shell number and S denotes the subshell. यहाँ लिख सकते हैं कि जो S है ये आपको subshell बताता है और जो 1 है ये आपको energy level या फिर shell quantum number बताता है. Second shell is also known as the L shell, where n is equal to 2, and the maximum number of electrons that can be occupied are 8, and the number of subshells are, इसके अंदर S भी होता है, and P subshell are included in the second shell. So we call them 2s and 2p. Third shell पे move on करें, so we call it M shell as well, n is equal to 3. Maximum number of electrons that the third shell can occupy is 18, and the number of subshells it has is S, P, and D. तीन सबशेल्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं, सो वी कॉल देम 3s, 3p and 3d. ऊपर इनकी जो पावर लगाएंगे, द पावर इज गोइंग टू टेल अस कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक में आएंगे. इफ यू लुक एट द फोर्थ शेल, वी आल्सो कॉल इट द n shell. N is equal to 4. Maximum number of electrons that can be occupied are 32, and four subshells are present in the n is equal to 4 or the n shell. 4s, 4b, 4d, and 4f. So if we look at the increasing order of the energy, मैंने आपको कहा कि it is always like s, फिर p होंगे, फिर d होंगे और फिर f होंगे. सही है. So if we start from the first shell, इसमें तो है ही एक सबशेल. देन कम्स द सेकंड शेल, ऑब्वियसली वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा. देन कम्स द थर्ड शेल, लेकिन थर्ड शेल में एक एक्सेप्शन होगी, एंड दैट एक्सेप्शन इज ड्यू टू दिस 4s and 3d, कि इन दोनों की जगह स्वैप हो जाती हैं. एंड व्हेनेवर वी आर फिलिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले 3d में से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, लेकिन ऐड हमेशा 4s में होंगे बाद में. वो हम आगे एक्सेप्शंस भी देखेंगे, दैट व्हाट आर द एक्सेप्शंस and where is the exception of 4s and 3d subshell used. वैसे we know the order of energy is always from the first subshell to fourth तक, या फिर s subshell से लेके f तक. हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी लेवल में देखेंगे तो फर्स्ट सेल की सबसे कम एनर्जी होगी और फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी. सबशेल्स में भी देखेंगे तो s would have the lowest energy and f would have the highest energy. So this is the principal quantum subshells and the types of subshells that we have discussed, S, P, D, and F in each of the energy level.